सत श्री अकाल કેમ છો મજામાં છો ને आप सब लोग का स्टूडियो 4 की ओर से मैं एंकर जैमिन आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। वेल दुनिया जैसे थम सी गई, बहुत सारी चीजें एक साथ होने को तैयार थी, पर जैसे कि कोविड-19 ने हम सबको स्टॉप का साइन बोर्ड दिखा दिया। पर कोई नहीं, यही चीज हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आई। जैसे कि हमने देखा बहुत सारे आर्टिस्ट ऑनलाइन परफॉर्म करते दिखे, जिनको शायद हमें कभी पर्सनली बात करने का मौका नहीं मिला, वैसे आर्टिस्ट हमारे ट्वीट का, हमारे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हैं और काफी फैंस के लिए ये बड़ा सा मोमेंट है। पर इन सब के बीच में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से बहुत लोगों ने जान गंवाई। पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ना कभी रुकी है, ना कभी रुकेगी, और इसी तरह से आप सबको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती रहेगी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बॉलीवुड की बात करें, मुंबई की बात करें, तो एक ऐसा नाम हमारे सामने आता है जो हर किसी बड़े से आर्टिस्ट और एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ अपने इंटरव्यू कर चुके हैं। और शायद जब उनको कैमरा के उस साइड बैठने का मौका मिले, वो एक्सपीरियंस कैसा होगा, वो आज जानने का मौका स्टूडियो 4 को और एंकर जैमिन को मिला। वो बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी है। शायद मैं उनके लिए जितने भी एडजेक्टिव्स ऐड करने जाऊं तो वो शायद इंग्लिश की डिक्शनरी में मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा। चलिए आइए, ज्यादा समय न लेते हुए उनको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। अ वेरी फेमस एंटरटेनर, अ पब्लिक पर्सनालिटी, अ वेरी फेमस इंटरव्यूअर ऑल्सो, फरीदून विद अस। And this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm scream. Okay, this a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just visit, have no shame, I admit it. Looking at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Hi Faridoon, how are you? I'm very well. Thank you very much, Jamin, for a wonderful introduction. Thank you so much. I really appreciate for your time and for providing this number of time the tremendous entertainment to all of us. And as usual, you are Thank you. fantastic. But in this situation, what Faridoon is Yeah, so somehow once the lockdown happened in India, and somehow just I could sense that the world has changed. There'll be world pre-corona and post-corona, and whatever we have to do, we have to just get into a new world. And so somehow I understood that it is not a holiday. We need to reimagine ourselves, our priorities, our work, our profile. And what I started doing was I started doing the first. I've done Skype interviews in the past. I've done it with Amir Khan. So Amir Khan was in Chicago a long time back when he was shooting for Doom 3. So I did a Skype interview with him. I've done a Skype interview with Priyanka Chopra. She was in Toronto, and we were in Bombay. And it was 3 o'clock in the middle of the night, and to just match her timing. We've done with Ali Zafar. He was in Lahore, and we were in Bombay, and we did with him. So several interviews we had done. So we had experience with that. So we did
a WhatsApp calling video interview with Anubhav Sinha. His movie Thappad had just released, and we found that the results were really good. The quality was very good as well. So we started doing it. The second one was with Arman Malik on WhatsApp calling, and then gradually, so then Sonu Nigam was in Dubai, and we just did a Skype interview with him, and after that we started doing Instagram live chats, and so that started getting exciting. And we started off with Tiger Shroff. You know, Tiger is a big celebrity, and obviously that was a big start to have. And we had Kriti Sanon after that, and gradually my team members discovered that we can edit the Instagram live chats in a certain manner later in the post production. So we started editing them in an interesting manner, and it started looking like as if it's like a television show. And so that was interesting. So we started getting quality. The team was working on the quality as well. We were gradually getting into more and more things. We started doing Zoom interviews, and we did a Zoom Facebook live interview and with Randeep Huda and a few other people right after Extraction. And there was a virtual studio for Netflix. So we were doing interviews for Netflix. We were doing interviews for Amazon and other OTT platforms like Hotstar and Voot and Z. So there were multiple experiences that we were having. There is number of experience or interviews you might have done in this situation. बट नॉर्मली फरीदून का जब दिन स्टार्ट होता है, मैं उस चीजों पर भी जरूर आना चाहूंगा कि फरीदून का दिन कब स्टार्ट होता है, वो No, no, I'll come to that. I'll come to that. So what I'm trying to say is that since lockdown, in say in 2 months, we have done over 90 interviews. Oh wow. And that's a very good average, and it includes the likes of Madhuri Dixit and Kartik Aaryan and Ananya Pandey and Sonakshi Sinha and Taapsee Pannu and Tiger Shroff and Kriti Sanon and Sara Ali Khan and Yo-Yo Honey Singh and Raftar and Badshah. So a lot of them, and a lot of them they're big stars. So it's a fabulous experience. So it's like we started off on a journey that we had no idea of, and we kept on learning new things, kept on upgrading in terms of technology and quality and other things. So that has been there. And apart from that, if you ask me about my daily routine, so daily routine is so I'm basically an early riser. So getting up in the morning and then just give water to my plants and help out my wife in daily chores. And so I'm doing a lot of like dishes and cleaning up the house and a lot of other stuff. Yeah. So yeah. So it's pretty interesting. So it's working out quite nicely. जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सबको बता दें कि भाई हम जैसे ही जितने बड़े स्टार्स के साथ जिनका नाम इन्होंने बताया, इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ वो इंटरव्यू कर चुके हैं और जिस तरह से काफी कैजुअल बातें अभी हमारे साथ कर रहे हैं, उतना ही टफ उनका शेड्यूल रहता है पूरे दिन का, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू लेने के लिए फरीदून आपसे अग्री मैं इस बात से करूंगा कि आप जिस तरह से मेहनत करते हैं पर उसके पीछे या फिर पहले जो मेहनत होती है वो काफी ज्यादा होती है किसी भी इंटरव्यू लेने से पहले, क्योंकि कोई भी एंकर हमेशा उसका स्टडी करने के लिए ज्यादा टाइम स्पेंड करता है. No, देखिए research तो I think research is paramount. You cannot take it for granted at all. You have to have some background of all. I think anyone and everyone. So no celebrity is small, no celebrity is big. Like you have to have the same attitude towards everyone. So see, I may be the face, but there's a team behind that. So there are team members who also help me out with research as well. And many a times we end up getting like a great interview and a great content, but it is the research of my team members that contributes. So even in terms of rapid fire, my rapid fire, my quiz, they are very famous. So there are people who help me out with that as well. So it's basically like a collaborative effort. It's like it's not merely like one person doing everything. It can never be that. What I'm good at is that I'm good at motivating. I'm good at motivating the team members that you can push for it and this and that. Like I'll give you an example. So we were getting like say 2.5 lakh, 3 lakh views for our videos. Usually
we tend to get in millions. So I had this pep talk with my team that let's go for a million views. Because what happens like when you're doing like Instagram chat, so the quality of the video is not the same as like regular cameras. Agree. So because of that, it impacts the number of views and other things as well. So I had this pep talk, and after that we were doing this Sara Ali Khan interview, and I said that let's aim for Sara's interview that it goes for a million. So we worked very hard, and the interview went very well as well. But the interview did not get the million. So it was my team that who they were the ones who gave me the info in the research that Ashish Chanchlani is someone who has certain opinions, and if you can possibly talk to him about it, it can work quite nicely. So I did, and once the interview was over, it was like a live chat. So all of us, we were excited that we are having something big, because we were excited and we could feel that there's something that is going to be big, and we posted in the evening, and that video flew. That video flew like anything. Like within a span of 4 hours or 5 hours, it had crossed 3 million views. Wow. And by the time in the morning that we woke up, and this is like a camera quality, like it's an Instagram quality, so it's not the regular quality. So by the time we woke up, it was something like 5 million views, and it was trending at number 2 on YouTube India. Oh wow. And the number 1 video was Tere Bina by Salman Khan. Oh, okay. This must have been a very, very special moment for you. It was. So so that particular, and then we had a rapid fire with Ashish Chanchlani that we featured the next day, and that flew like anything as well. Oh. And by the time we woke up in the morning, so it had around 4 million views, and it was trending at number 3. So 2 videos back to back at number 2 and number 3, and a huge addition in the number of subscribers to our channel. And so by the end of it all, that particular video itself, that particular interview itself, it had crossed 13 million views, 13 to 14 million views by now. So when you so the idea is that if you motivate the team, so maybe Sara Ali Khan did not get us those many number of views, maybe that interview, even though it was a very good interview, but we had an Ashish Chanchlani, and that did wonders for us. So I'm good with motivating, but at the end of the day, it is the entire team that work, and I work equally hard. So we did this Instagram live with Sunny Leone. So Sunny is in Los Angeles. So I did this interview at 3 o'clock in the night. It was 3 o'clock in Bombay, so that it can match 3 o'clock in Los Angeles. हम उस बात पे थे कि टीम हमेशा मोटिवेट रहनी चाहिए, और शायद उन लोगों की मेहनत या फिर आपका अट्रैक्शन और शायद करंट टॉपिक कभी-कभी काम कर जाता है. Yeah, then so a team is important. उसके अलावा your bosses are important, because there's so many logistical decisions that we can't take, that have to be taken by the bosses. So we are very lucky that we have a very dynamic boss, and who always supports us in anything and everything that we want to do. So that is important as well, that we are lucky with that as well. So overall, I think it's a nice sort of situation. ओके, वेल अभी बात है आपके बॉलीवुड कनेक्शन पर, और जैसे कि कैनेडियन देसी स्टार्स हम स्टूडियो 4 पे बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है, वो भी बिफोर यू म्यूजिक पर ऑन एयर होने वाला है. दिस होल कांसेप्ट इज डन बाय हेमा खान. पर मैं आपके बॉलीवुड कनेक्शन के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि हर एक स्टार को अप्रोच करना और फिर उनको इंटरव्यू के लिए कन्विंस करना और फिर इतने अच्छे व्यूज लेकर आना, सो ये जर्नी कोई 1-2 दिन की काम नहीं है. कहाँ से वो शुरुआत हुई थी, और आज जाके फरीदून जब एक फोन घुमाता है या फिर एक मैसेज करता है, तो आप बताइए वो आर्टिस्ट आपके साथ बात करने के लिए रेडी होता है, वो हुआ कैसे इस चीज को? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं आपको कि दैट ये अज्यूम करना कि दैट कंसिडरिंग दैट आई हैव डन थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज, तो अगर मैं एक मैसेज कर दूं तो आर्टिस्ट सारे राजी हो जाते हैं, तो वो सही नहीं है. बहुत से हो जाते हैं, लाइक बहुत से जो आर्टिस्ट होते हैं, दे आर वेरी कीन टू बी इंटरव्यूड बाय मी,
But at the same time, there are several big stars who have a lot of plans in terms of how they want to project themselves, what sort of interviews that they want to do at what point of time. Because many of the interviews that we get, it is during the promotions of any movie. When the promotions are not taking place, mostly the stars, like the big stars, they don't do it. They don't do interviews other than if there is like any specific occasion, or if they're launching something, or something in that effect. And apart from that, see, the entire journey, the way it has been, it's just that एक शेर है कि that जो जहां है कदम जमाए रहे, जो जहां है कदम जमाए रहे, न जाने कब ये जमीन चलने लगे. तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जैसे मैं अभी बॉलीवुड हंगामा में पिछले 13 साल से मैं काम कर रहा हूँ. So when I started off, people used to have apprehensions that how can you have videos on internet. So those are apprehensions that people had. The network connectivity in India was very, very slow, and just for watching like a 5-minute video, one had to leave it for buffering for half an hour. There was no YouTube at that point of time, so we had our own player. We had our own video player on Bollywood Hangama. We used to post all the videos. So it was struggle. It was a struggle. People used to the publicists. They used to give preference mostly to the news channels. Okay. So there were a lot of struggles, and it's just that you keep on doing what you believe in doing. You keep on working hard. You keep on trying to improve yourself, and gradually you make a mark for yourself. And the idea is not to get bored with what you're doing. The idea is to keep on trying again and again. So this is something that I always tell. I tell quite a few people. I was part of this press conference. It was an informal press conference with Mr. Bachchan for his movie called Team. So there was Sujoy Ghosh, he was a producer, and Vishal Girdani was the moderator, and the director was there. So once they were done with talking about the movie, it was open to the media, and there were no cameras involved. So media was informally asking questions. So one of the journalists asked that, which is your most satisfying work as an actor till now? He said none of them. So he said, how can you say that? You're such a big star, and you're such a huge movie star. How can you say that none of your acting works have been satisfying for you? So he said that the moment you get satisfied as a creative person, that is the death of you as an artist. So you should never get satisfied. So one thing which is very important is not to get satisfied, not to praise yourself too much. The idea is if one thing is done, then move on to the next one and try and do as best as possible. So that's what I believe in. So I really don't try and give myself time to just praise myself or think that, oh, wow, I've done all these things, and the stars, they're eager to get interviewed by me. Quite a lot of them are, and not everyone is easy to get. So well, ये सारी बातें तो की फरीदून ने कि भाई इंटरव्यू किस तरह से प्लान किया जाता है, हमेशा टीम का इंपॉर्टेंस होता है, पर अभी भी देखिए वो अपने नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए और अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए तैयार है. पर फरीदून मैं इधर मैं आपको खास पूछना चाहूंगा कि हाइमा जी के साथ आपका रिलेशन कैसे बना, फिर अभी कैसे चल रहा है, क्योंकि फरीदून के अपने बिजी शेड्यूल के अंदर हमारे लिए टाइम निकाल के हमसे बात करना, ये भी एक हमारे लिए स्पेशल एडिशन जैसा है कैनेडियन देसी स्टार्स के लिए, आपका टाइम देना. पर ये ऐसा ही नहीं हुआ होगा, हाइमा जी के साथ आपका स्पेशल रिलेशन जरूर होगा. I know Arshad as well. I know Heima for quite some time as well. So मैंने सलमान के साथ में उनका जो टूर है दबंग टूर, मैंने दुनिया के काफी मुल्कों में जाके मैंने कवर किया है उसको. तो मैं टोरंटो भी मैं आया था, जब यूएस और कनाडा में जब हुआ था तो मैं टोरंटो भी आया था. एंड वहीं से हाइमा से, अरशद से, इन लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ, और फिर फेसबुक पे वी वर कनेक्टेड. और मैं देखता रहता था जो वो बहुत ही पैशनेटली वो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती रहती थी, और अरशद वाज ऑलवेज देयर with some dynamic ideas. So that's how I came to know them, and so I've been following I think everything that you guys are doing on Facebook, and it's really commendable.
दैट्स गुड आपकी तरफ से ये आना हमारे लिए भी काफी एक्साइटेड है मोमेंट जैसा है, क्योंकि कैमरा के उस साइड को भी आप जानते हैं कि जहां पर हमें प्रिपरेशन होती है, फिर काम होता है, फिर फाइनल आउटपुट आता है। हम अभी बीच वाले सिचुएशन में है, पर ये आपका बोलना ही काफी मोटिवेशनल है। पर हाउ क्लोज यू आर विद द सेलिब्रिटीज इन मुंबई और विद इन बॉलीवुड इंडस्ट्री? देखिए, अ, कोई भी मैंने एक हमेशा एक कोशिश इस चीज की करी है कि दैट इफ यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड देन you need to have some sort of distance with everyone in all your relationships, especially your professional relationships. So I have great relationships with anyone and everyone. So thankfully, I think maybe I'm one of the very few anchors and journalists who gets interviews of the biggest of stars, be it Akshay Kumar, Ajay Devgan, and Amir Khan, and Shah Rukh Khan, Salman Khan, Varun, Ranveer, Sushant, Ayushmann Khurrana, you name it, Karthik Aryan, all of them. And because I've never been into any sort of camps, so I just keep my like I'm the same with everyone. I try to be respectful. I try to maintain my distance so that because the moment you start just attending parties of stars, so that particular moment you lose the plot. So I don't go for parties. I consciously don't go for parties, and I try not to socialize with stars beyond work. So क्या होता है कि वो फिर एक डिस्टेंस रहता है, वो एक रिस्पेक्ट रहती है, and वो that mutual respect जो है बहुत important है for like a long lasting thing. And so in the last 10 years I think I'm one of the very few anchors, maybe one of the only anchors who's had the most number of interviews with Akshay Kumar, Ajay Devgan, um, Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan maybe not, but Salman Khan for sure. Amir as well. Amir gave only one interview for PK, and he was there with us for Dangal as well. We went to Delhi and we spoke to him. So he did not do any interviews in Bombay. He had done a few television channel interviews in Delhi, and we went to Delhi and did that. So we were the only ones in Bombay who got an interview for Dangal with Amir. So yeah, and apart you name it, Ranveer and Priyanka, Katrina, Deepika, Anushka Sharma. So that has been possible only because I feel because of the fact that first of all I don't belong to any camps. I don't indulge in gossiping of any sort. I keep my distance, and they know that when I'm talking to them, I'm coming from like a very neutral space, and we try to have fun. And entertainment is a very important part of my interviews, and that people like a lot. So the younger audience, the 18 to 24 audience, they really like my audience, the interviews, because we try and make it fun, entertaining, and we take audience questions, fan questions on Twitter and Instagram. So the youngsters, they like it. They really love it. मैं ये इधर ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि जब भी कोई भी स्टार आपके सामने आता है या फिर कोई भी एंकर अपने आप को जब प्रेजेंट करता है, उसकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है। तो आपको खुद को क्या लगता है, आपकी वो स्पेशल क्वालिटी क्या है जो आपको ये हमेशा ड्राइव करती रहती है और सारे इंटरव्यूज करने के लिए और लोगों को मिलने के लिए? If you ask me about myself, so as I told you, like I never take it for granted. I I never take it for granted. So there are a few things like if you've researched, if you're being respectful towards the artist, like so you have to be respectful towards anyone and everyone. It's not that हम stars को सामने हम respectful होंगे, बाकी अगर कोई उनका staff होगा या फिर कोई और कोई होगा तो हम हमारा we can be pompous and arrogant with them. So no, you should be the same with everyone. You should be respectful because the sort of energies that you emit, that is the sort of energies that you'll receive. So that's very very important. And apart from that, the most important thing is that what is it that they are getting out of being interviewed by you. So try and not poke into their personal space beyond a point. Some of them, they are comfortable, okay, but if someone is not, then don't get into the personal space and don't try to con them. Okay, it's very important that the way you are representing the artist in terms of
the headlines and the way you're projecting the interview later, that has to be done in a responsible manner. It should not be that you're trying to con them by using a very sensational sort of headline and which later they may get into trouble or anything of that sort as well. So you have to be careful with that as well. So if you are careful about it, like say for example, recently only there was one artist and one actress, for example, and she and her team requested that there are a few things that maybe she has said in the interview and she can get into trouble. Mm-hmm. Because our interviews followed quite a bit, so everything tends to get highlighted many a time. So we told her that don't worry, and we actually showed her the interview, and there were a few changes that she requested, and we took out those portions because if she can get into trouble or something, it's not worth it. So those are the things. It's basically like a relationship building sort of thing. So if you are building a relationship for long term, you'll be careful. If you don't believe in long term relationship, so you may be having like a one sensational interview, but then that star may not want to meet you ever, may not want to see your face ever. So those are a few of the things that you be respectful, you keep your distance, and it's a win-win situation for everyone there. दैट्स ट्रू। और फरीदौन का ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है जहां पर काफी हाईलाइट में आ गया वो इंटरव्यू और फिर वो स्टार को या फिर किसी भी आर्टिस्ट को नेगेटिव पब्लिसिटी और स्पेसिफिक चीज के लिए मीडिया ने काफी जोरों शोरों से उनसे लिए बात किया या फिर वो न्यूज पर्टिकुलरली बन गया? देखिए देखिए नेगेटिव तो मैं उस तरीके से मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये है कि our interviews tends to get reported a lot in terms of people. Even now, my team keeps on sending me at least 10 to 15 links daily of all these newspapers and other websites who tend to take stories from our interviews. That is something which is like a daily regular thing. So in terms of negative, at times what happens that if you're doing well, then there are people who can be mischievous. And those things happen. So pata chala ki that because these days in social media, anyone can take out any video from out of context and they can post it with like a sensational headline, जो कि उसमें वीडियो में शायद हो भी नहीं, and then things can get a bit bad. So, but then that is part of the game. That if people are trying to create problems for you, that means that you must be making a difference. That is why they are trying to unsettle you. So even that, I feel that one should ignore it. So I never respond. So on social media, if anyone is trying to troll me or if anyone is trying to tell me that you are going wrong here, you're going wrong, I don't respond. भाई इतना अगर आपको पता है कि that मैं यहाँ पर गलत जा रहा हूँ तो आप करके दिखाओ ना. So I don't respond to it. I never respond to it. Like any sort of negativity or anything, so I just don't respond to it. So from my side, I try and make the best possible efforts. That I should not do anything that can hurt anyone. I try my best. So that is, I think, we'll continue doing that. Yeah. करेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि आपने कितने दिनों और कितने घंटों उस पर्टिकुलर हाफ एन आवर या फिर 30 मिनट्स 40 मिनट्स इंटरव्यू के लिए पीछे इन्वेस्ट किए, और तब जाके जब वो आउटपुट वो कमेंट आए, तो हाउ डिसअपॉइंटिंग और डिसरप्टिंग फॉर यू दोस काइंड ऑफ सोशल मीडिया? Comments तो बहुत all sorts of comments आते हैं. You can't possibly and some of them, they are so baffling and they are so stupid that it's like it's not even worth. So many of the comments I don't even read, to be honest. Even on social media, many a times I don't read too many comments. Because I personally feel that it's rather than wasting time on reading those comments, rather than do something constructive, rather than doing that. So I really don't. And if I see any negativity or there are times when people can be really nasty, and so I simply block it. I simply ignore it. That is, so I don't respond. So you have to be thick skinned. You have to be like if you're getting like millions of views and all those things. So you have to be ready for brickbats. You have to be ready for trolling and nasty stuff. So that will come. It's just that you have to have a mechanism for tackling it, and just don't read, or if you happen to read, block it. And just move on. That's it. Yeah,
That's really a nice idea because उसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते. But is there any social media which is not managed by you personally and maybe by your team? No, 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 I handle it everything. It's too much to handle, but I'm there on Instagram, I'm there on Twitter, I'm there on Facebook, and there's this new platform called Hello, which is there. So I'm on that as well. I'm having almost 1.5 lakh followers on that. I'm having around 1.5 lakh followers on Twitter. I'm having around 82,000 followers on Instagram and Yeah. Facebook as well. I think it's a wonderful medium. Facebook, I think close to 14,000 followers on Facebook. So it's a pretty decent number, and everything has its pluses and everything has its negatives as well. So, but I think look at the positives. And But there have been occasions when people give constructive criticism in a civilized manner, in a decent manner. I've learned yeah. So the constructive criticism, which is and it's said in a decent manner, and you know that person likes you and really wants you to do well, or maybe if you just bring a few changes here and there. So that is something that is always welcome. I've incorporated such changes always, and it has benefited me. मैं एक पर्सनल चीज के बारे में आपका ओपिनियन जरूर पूछना चाहूंगा. हर एक आर्टिस्ट और हर एक एंकर अपने एक प्रेजेंस भी बनाता है और आपकी एक प्रेजेंस वो भी है जो सबको नजर में आती है, वो कि आपकी कैप. हर इंटरव्यू में आपके पास अपनी कैप होती है और वो अलग अलग कलर अलग अलग तरह की आप हमेशा पहन के बैठते हैं. इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन और यू जस्ट इट्स पार्ट ऑफ योर ड्रेसिंग सेंस? So this is, in fact, my team felt that this is something that can make you different in a way so they felt that it can be something that can really stand out and you can make it flashy. So there's an RJ in Bombay. So he wears like dark glasses everywhere. Okay. He wears dark glasses everywhere, even in cinema halls, inside cinemas, he wears dark glasses. Oh. Even while doing his radio show, it's a very popular RJ Rituraj or something like that. Yeah. So but it works. I think as for the brand, and it works quite nicely, and people tend to like the colors and the freshness which tends to be there. So I feel that why not? आई विश कि उसके लिए भी आपको जल्दी से स्पॉन्सर मिल जाए क्योंकि फिर वही स्पॉन्सरशिप के कैप्स मिलते रहेंगे, देन फरीदून वो भी प्रमोट करता रहे. I don't mind if someone wants to do that. Yeah, but are you a Roger Federer fan by the way? No, I'm not. Oh. I love playing. Like I play tennis. I still do whenever I find time. And but I played tennis in my college quite seriously. But I'm more of like a Boris Becker and John McEnroe. That sort of like a fan of that. But I really don't follow any sport anymore. I used to follow a lot of cricket earlier, but somehow I'm not able to follow any sport, which is unfortunate. I would love to. फरीदून के लिए कभी ये डिफिकल्ट हो जाता है कि वो कोई भी एक साइड सेलेक्ट करने को बोला जाए, चाहे आपको ये पसंद है या फिर ये पसंद है, स्पेशली जब बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात आती है, तो फरीदून के लिए वो काफी डिफिकल्ट हो जाता होगा क्योंकि आपको तो सारे सेलिब्रिटीज के साथ काम करना है, उनका इंटरव्यूज लेना, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी नहीं कभी. नहीं, देखिए वो मुझसे अब जैसे आप इस वक्त मेरे साथ इंटरव्यू करें तो इस तरीके के मेरे साथ काफी इंटरव्यूज होते हैं. मतलब लॉकडाउन जब से हुआ है तो कम से कम आई थिंक मेरे ख्याल से 15 इंटरव्यूज तो मेरे ही हो चुके हैं. तो मुझसे पूछते हैं उसमें कि आपको मतलब ये पसंद है कि आपको वो पसंद है. तो सी फॉर मी आई कैन नॉट टेक अ नेम बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड that universe has a strange way of conspiring, and their social media, the way it is, it reaches the stars. In one way or the other, it reaches the star. And so somehow a lot of these 18 to 24 age group, they tend to follow my interviews, and they are very active. They make these 15-second videos and 30-second videos, and they share it like Instagram, Twitter, and this and that. So the moment any star they come to know that there was a comparison and he has chosen this. So there tends to be at times a bit of a bad blood that you preferred us over them, and so people can be touchy.
people can be touchy. So that is why I think names and just choosing anyone from either किसी one का of them. किसी का स्पेसिफिक इंटरव्यू करते वक्त फरीदून को ऐसा रियलाइज हो जाता है कि दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग वेल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग और मुझे ये सवाल अवॉइड करना चाहिए, या फिर इसको मैं तरह से तुरंत टर्न करता हूँ इस टॉपिक को। कभी आपने वैसा कोई रियलाइज किया है कभी? देखिए क्या होता है कि that if you believe in something strongly, then you should ask. And if it is if you strongly believe in it, so you'll get a gut feeling कि हाँ मुझे पूछना चाहिए. And one thing that I've always done is that I've taken my chances. In terms of asking questions, I have taken my chances. So I believe that if your intention is right, that if you're not trying to con a person, if you're not trying to shortchange a person, then they'll get the question, they'll get the intention correctly, and they'll answer you. So in maximum cases, you get a proper answer, and there have been so many occasions when people have felt good after speaking up about almost anything, about like be it their personal stuff or about any controversy or anything. Like Neha Dupia, she had this controversy on rotis recently, and so we spoke at length, and I could feel that she felt good by the end of it because she spoke up. She spoke about whatever she had been going through. So these things, they tend to happen. Okay. But I think if your intention is right, then you should go for it. And I tend to go for it, and mostly the results tend to be good. That's good. क्योंकि हमें हमेशा वही समझने की जरूरत होती है कि सामने वाला कैसे कंफर्ट हो पाए और कैसे सारी डिटेल्स मैं उनके पास से निकाल पाऊं। पर रिसेंटली जो इंसिडेंट्स हुए, मैं उसके पर भी आपके पर राय जरूर जानना चाहूंगा। आपकी फीलिंग्स के साथ काफी आप अटैच थे वाजिद खान जी के न्यूज हमें कल जी, विच इज क्वाइट डिस्टर्बिंग। और आगे भी हमें बॉलीवुड की इंडस्ट्री में 2-4 नाम ऐसे हमारे बीच में से चले गए जो काफी इंडस्ट्री में काफी बड़े नाम थे, पर वाजिद खान के साथ आप काफी क्लोज थे। और जैसे मैंने आपका ट्वीट पढ़ा कल, सोनू निगम जी के द्वारा आपको जो जानना मिला, फिर आपने ट्वीट किया उस चीज को, ये काफी डिस्टर्बिंग है। एंड देखिए ये क्या होता है कि इत्तेफाक की बात है कि इवन इरफान कभी अभी इंतकाल हुआ तो मुझे काफी देखिए जैसे वाजिद भाई भी हैं, तो हमारा कोई ऐसा नहीं था कि हमारा रोजाना का हमारे को उठना बैठना हो या फिर हम कोई बातचीत हो, तो मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं करूंगा। लेकिन क्या होता है कि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो कि आप उनसे मतलब एक सर्टेन लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ही चाहे आप उनसे मिले हो, लेकिन आपको उनसे एक वार्मथ मिलती है, आपको उनसे मिलता है कि यार ये दिस पर्सन बिलीव्स इन यू, दिस पर्सन जो अगर मुंह पे है वही दिल में भी है। तो ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। ये इरफान के साथ में भी यही था, इरफान भाई के साथ भी मतलब जब उनके इंतकाल हुआ तो मैंने जब उनके इंटरव्यूज देख रहे थे जो हम लोगों ने किए, तो अब वी हैड सम फैबुलस कन्वर्सेशंस अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, अबाउट his movies, about religion, about his about Hollywood, about his struggle and his views about a lot of things in life, about controversies and what he learned from controversies. So I realized that there was a bond that we had somewhere, even though we met limited number of period of time, but we had a bond. And in fact, I wanted to meet him once he started working on English medium, Angrezi medium, but somehow I could not, and that is a regret that I have because he was shooting in Udaipur, and I was supposed to go and cover the shooting, but somehow it did not happen. Still, I went to Udaipur for some other shoot, and still I tried to meet him, but I could not. So वो एक मुझे regret है कि मेरे उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वाजिद भाई के साथ में करीबन 9 साल पहले हम लोग थाईलैंड में एक उनकी फिल्म थी, उसका लॉन्च था वहां पर, तो वहां पर हम लोग की उनसे पहली बार मुलाकात हुई। तो बहुत ही वार्म आदमी, बहुत ही ज्यादा एकदम मिलनसार। उसके बाद मेरी उनसे अक्सर मेरी उनसे मुलाकात हुई, फोन पे भी मेरी उनसे बात होती थी। उनकी आवाज मुझे बहुत पसंद थी, बहुत ही दिल को छूने वाली आवाज थी। और फिर टोरंटो में मेरी मुलाकात हुई सलमान के शो में। सलमान का उनका जब शो खत्म हुआ था, वो सपोज टू इंटरव्यूज विद सलमान एंड जैकलिन एंड सोनाक्षी, एंड सो जो ग्रीन रूम था वहां पर सलमान सर का, तो उसमें वाजिद भाई वाज देयर एज वेल। तो वहां मिले और मतलब गले मिलना उनसे हुआ, उनसे काफी लोग हम लोग बात हो रही थी कि आपका इंटरव्यू करना है।
फिर इनका सोनू सोनू सर का क्या इफ्तार था 2 साल पहले, तो वहां पर बहुत ही उन्होंने कम लोगों को बुलाया था, मतलब समझ लीजिए आप, वाजिद थे और उनके अलावा जो सोनू सर के जो उस्ताद हैं उनकी उनकी फैमिली थी, और हाकिम अलीम जो जो हेयर ड्रेसर हैं वो थे। मुश्किल से 10 लोग होंगे, तो उसमें वाजिद भाई, तो वहां उनसे मुलाकात हुई, तो वहां पर उनसे काफी रब की बातें उनसे हो रही थी। तो वेरी वार्म पर्सन। फिर अभी जब इनका दबंग आने वाली थी, दबंग 3, तो उससे पहले इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू उनका रहा, और उससे पहले उनसे कम्युनिकेशन था जो भी है, तो बहुत ही मिलनसार, बहुत ही मोहब्बत करने वाले और दिल से बात करने वाले, तो वो इनकी एक पर्सनैलिटी थी। तो ऑब्वियसली जब ऐसे जब मतलब हुआ, तो तकलीफ तो डेफिनेटली होती है, बट लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा उनसे कोई बहुत हर वक्त का उठना बैठना था, ऐसा नहीं। बट लेकिन मुझे लगता है कि जिंदगी में जरूरी नहीं है कि आप जिन लोगों को पसंद करें या जिन लोगों से आपकी अच्छी इक्वेशन हो, आप उनसे रोजाना मिलते हो। आप 10 बार भी मिले होंगे, लेकिन कुछ एक केमिस्ट्री होगी आपकी जो आपको हमेशा याद रहेगी, एंड आई थिंक दैट इज प्रेशियस। करेक्ट करेक्ट। और मैं इस मोमेंट पे मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि कैनेडियन देसी स्टार्स जो हमारा शो आने वाला है, और उसके ऑलमोस्ट एपिसोड्स हम सारे शूट कर चुके हैं, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट देसी स्टार्स एंड स्टूडियो चार प्रोडक्शन? सो मैंने इसका कैनेडियन स्टार से मैंने काफी शूटिंग्स मैंने देखे हैं फेसबुक पे। हेमा बहुत ही एक्साइटेडली शेयर करती रहती हैं, और आई फॉलो इट वेरी कीनली। फेसबुक पे बहुत सी चीजें लोगों की आती हैं, लेकिन ये है कि हेमा जब भी पोस्ट करती हैं या फिर अर्षद जब भी पोस्ट करते हैं, तो मैं उसको देखता हूँ, बिकॉज ये है कि वो एक एनर्जी उसमें आती है। एंड हेमा जिस तरीके से एक बहुत ही इनोसेंस के साथ में वो एकदम वो परस्यू करती हैं, और एक उनका जो जिस तरीके से जो उनका पैशन है कि कुछ शी वांट्स टू डू समथिंग न्यू एंड समथिंग डिफरेंट, सो आई फाइंड दैट वेरी वेरी फैसिनेटिंग। एंड so we we see a lot of shows, we meet a lot of people, but I've come to realize कि that जो किसी भी creative person में जो एक ईमानदारी है अपने काम की तरफ, I think that is something that makes that person unique, और वो मुझे हाइमा में नजर आती है। Like I wish her all the best, and Studio Chaar as well, and all of you guys, that I'm sure that you guys will rock for sure. थैंक यू सो मच। और ये वैसे भी नॉर्थ अमेरिका का सबसे पहला रियलिटी शो है जहां पर साउथ एशियन टैलेंट को एक स्टेज मिलने जा रहा है, क्योंकि एक तो बहुत छोटा पॉपुलेशन और एक मल्टी कल्चरल पीपल होने की वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि आपका टैलेंट और स्पेशली आपकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्टेज बनना चाहिए वो मौका कभी मिला ही नहीं। और जब ये मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली ये स्पेशल मौका होगा, और देखना ये होगा कि आगे शो जब ऑनर होगा तो लोगों को कैसे पसंद आता है और लोगों के कमेंट्स मिलते हैं। बट अगेन यू नो, ये सारी चीजों के बीच में आपने शायद हमारे चैलेंज वीडियोस ऑब्जर्व किए हो, तो हम हमेशा एवरी वीक कैनेडियन बेसिस स्टार से कंसेप्ट उनको वीडियो चैलेंज करते थे, जिनको एक टास्क दिया जाता था। तो आपने आपने हमारे वीडियोस वो कभी ऑब्जर्व किए हो, तो आपको स्पेसिफिक कमेंट वो चैलेंज के वीडियोस पे कुछ देना हो तो? नहीं, I find that interesting. I find that interesting. मेरा एक्चुअली अटेंशन स्पैन मेरा बहुत कम है, तो अगर कोई चीज मुझे इंटरेस्ट नहीं करती है तो फिर मैं उसको ज्यादा टाइम में देख नहीं पाता हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले भी मैंने कहा कि जिस तरीके से ये वीडियोस में देखता हूँ इनके हाइमा के टाइमलाइन के ऊपर, आई फाइंड दैट इंटरेस्टिंग कि वो एक उसमें कुछ एक कुछ उसमें एक देयर इज समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी which is very engaging. So I'm personally quite confident that it is not only in I think Canada or North America, but I think everywhere. This is something that is going to make a mark and people will talk about it. ऐसा मुझे लगता है। पर फरीदून सिर्फ एंकरिंग नहीं, सिर्फ जर्नलिज्म नहीं, पर पोएट्री भी काफी अच्छी लिख लेता है। हाँ, पोइट्री मैं इनफैक्ट बहुत कम उम्र से मैं लिख रहा हूँ, एंड दैट इज वन ऑफ माई पैशंस। एंड जो भी मुझे फ्री टाइम मुझे मिलता है, तो ज्यादा मतलब फिल्में या देखने से या फिर और किसी चीज से मुझे शौक है कि मैं पढ़ने का मुझे शौक है, उर्दू शायरी पढ़ने का मुझे शौक है। एटलीस्ट पिछले 1-1.5 साल से तो मैं बहुत ज्यादा कीनली उसको परस्यू कर रहा हूँ।
एंड मुशायरे सुनने का मुझे शौक है यूट्यूब के ऊपर, पुराने पुराने मुशायरे, मतलब जो बड़े बड़े शायरों के हैं उनके डिस्कशंस देखने का शौक है मुझे, क्रिटिकल एनालिसिस के लेवल पे. सो दैट इज समथिंग दैट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट. यस, फॉर श्योर. उसमें से कोई एक आज हमारे इंटरव्यू में आप शेयर करना चाहें, कोई पोएट्री जो भी आपने लिखी हो और कभी पोस्ट की हो? मैं आपको कुछ शेर सुनाता हूँ. आइसोलेटेड है, मतलब नॉट पार्ट ऑफ एनी. एक जैसे है कि दैट सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, अब जो भी होगा बुरा होगा. क्या बात है, क्या बात है ये. और एक और है कि ख्वाब की मौत के बाद, ख्वाब की मौत के बाद जो भी होगा अच्छा ही होगा. क्या बात है, आय हाय हाय. ख्वाब की मौत के बाद जो भी होगा वो अच्छा ही होगा. क्या बात है. और मैं आपको दो तीन मैं आपको और सुनाता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे मतलब कपलेट्स ही हैं कि ये जान तो आनी जानी है, ये जान तो आनी जानी है, कहीं रेत तो कहीं पानी है. ये जान तो आनी जानी है, कहीं रेत तो कहीं पानी है, घुटनों के बल चलने पर जो आमादा हैं, घुटनों के बल चलने पर जो आमादा हैं, समझ लो खत्म उनकी कहानी है. क्या समझ लो खत्म उनकी कहानी है. क्या बात है, जबरदस्त. एक मैं आपको शेर और सुनाता हूँ कि बेजार है हक पसंदों का जुनू, बेजार है हक पसंदों का जुनू, पानी था अब बर्फ है ये बेपरवाह सा खून. क्या बात है, आय हाय. बेजार है हक पसंदों का जुनू, पानी था अब बर्फ है ये बेपरवाह सा खून. तो ये चीजों को कभी आपने कॉमर्शलाइज करने का सोचा नहीं, क्योंकि आप बहुत अच्छा लिखते हैं ये सारी चीजें. नहीं, कमर्शलाइज आई थिंक पोइट्री तो यूजुअली उतना कमर्शियल उसके अंदर एलिमेंट नहीं होता है. लेकिन ये कि टू बी ऑनेस्ट मैं अंग्रेजी में लिखता था. I've been writing poetry in English since my teenage, and I've been published a lot in various magazines as well. ये उर्दू में मैंने करीबन 1.5 साल पहले से मैंने लिखना शुरू किया है. मेरे पास काफी अच्छा खासा अभी मेरे पास मटेरियल हो गया है. और मेरे एक दोस्त हैं तो नॉर्वे में उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारा कलेक्शन पब्लिश कराऊंगा और ये सब. तो वो धमकी दे रहे हैं मुझे कि वो कलेक्शन पब्लिश मेरा कराना चाहते हैं. तो लेट्स सी कि उसमें कमर्शियल अगर कुछ किस तरीके से क्या होता है नहीं होता है. लेकिन मैंने उसके बारे में कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा नहीं है, because this is something which is a passion, and I really feel good when something which I feel is surprising और मैं लिख लेता हूँ और मुझे सरप्राइज करता है कि यार मतलब ये कुछ अलग सी कुछ चीज हुई है. एंड देन आई थिंक मुझे लगता है कि पोइट्री से एक आपको जिंदगी को जीने का आपको मकसद मिल जाता है, और कुछ सर्टेन चीजें जो आपको परेशान कर रही होती हैं या फिर आपके माइंड में कुछ सर्टेन कुछ disturbances होते हैं, तो I feel that you get a feeling of getting uncluttered in the mind. Correct. So which is I think very good for your personal I think growth, and I think that in itself is priceless. और priceless. इतनी बखूबी जिस तरह से आप हर चीज को कर लेते हैं, उतना बखूबी हर कोई उस चीज को नहीं कर पाता, क्योंकि राइटिंग इज समथिंग जो सीख नहीं सकते आप. आपके अंदर वो होना चाहिए, वो वोकैबुलरी होनी चाहिए, आपके पास इतने शब्द होने चाहिए, वो सेंस होना चाहिए, तब जाके आप कुछ चीजें लिख पाते हैं. आई थिंक ईच टू इज ओन. इत्तेफाक की बात है कि हर किसी का अपना अपना एक वो है. मेरी फैमिली बैकग्राउंड में जिस तरीके के मेरे फादर भी मेरे शायर थे, मेरी मदर भी लिखती हैं. सो फैमिली का हमारा जो माहौल था तो वो आर्टिस्टिक बहुत ज्यादा हमेशा से रहा है. तो आई थिंक दैट हेल्प्स एज वेल. बाकी ये है कि दैट इट्स अप टू पीपल इफ दे लाइक इट. जैसे अगर आपने सुना होगा, आपको पसंद आई चीज, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज कामयाब है. और अगर आपको पसंद नहीं आया और आप भर्ती का आप तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ और मेहनत करने की जरूरत है. तो थैंकफुली मतलब ये है कि पीपल आई कैन सी देम breaking into a smile whenever I recite anything, so which is I think always encouraging that things are on the right path. So hopefully we'll keep on trying. Okay.
पर ये एक और चीज मैं इधर जानना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत सारे इंटरव्यूज भी देखते होंगे, क्योंकि हमेशा माहौल जो आपके आसपास चल रहा है, जो कंपटीशन चल रहा है, उसको भी ऑब्जर्व करना और क्या चीजें नई हो रही है वो भी उनसे सीखना बहुत जरूरी होता है। कभी आपको लगता है कि एंकर गेस्ट के ऊपर हावी होने का ट्राई करता है, या फिर उनसे ज्यादा डिटेल पूछने का या फिर बताने का कोशिश करता है, तब जाके इंटरव्यू अच्छा नहीं होता है? यू ऑलवेज गिव अ चांस गेस्ट टू स्पीक मोर। See, it's not a good idea. The idea that if you're trying to be overbearing on a guest, then I mean, I think it's very important to put yourself in the other person's shoes. That if someone tries to bully you, then how will you feel? Obvious, yes, So yeah. if you will not like it, then you should not do the same. Because see, the moment I always tell to a lot of people amongst the fraternity that देखो मुझे number one बनने का शौक नहीं है. I'm happy to be number two as long as I'm having this assurance that people they're comfortable with me, that they're not distrusting me, that behind my back they are talking good about me. So if that is happening, then I'm fine and I'm willing to come second as well. I don't want to con people. I don't want to do anything that bothers anyone in terms of in a negative manner. It hurts anyone. And I've realized that even when you are being civil and when you are being nice, you still can do fabulous interviews. You don't have to be like bullying or shouting or screaming or trying to just put down the other person to have a good conversation or to have a good interview. No, I don't think so. You can be nice and civil and happy. A lot of my interviews they're entertaining. I give a lot of emphasis on infotainment. I genuinely want to make people happy. I really feel wonderful when I see my guests that they're actually enjoying the conversation and the games and the rapid fire. They're actually enjoying it. I feel wonderful. I feel wonderful that if you can make people happy, you're doing a social service. That's it, that's it. और हम So I have a lot of respect for entertainers. I have a lot of respect for entertainers. Genuine entertainers, I have a lot of respect for them. और मैं ये बात जरूर आपको बताना चाहूंगा कि आपको दुनिया के हर कोने से लोग देख रहे हैं और जितना प्यार करते हैं उससे भी ज्यादा प्यार आपको मिलता रहे ऐसे विशेष Thank you very much. की ओर से। पर ये लास्ट का जो समय है, मैं जरूर इस टाइम को रैपिड फायर क्वेश्चंस में यूटिलाइज करना चाहूंगा। कुछ सवाल ऐसे जो आपके ऊपर मैं डालना चाहूंगा कि जिसके दौरान फरीदोन थोड़ा विचार में हो जाए कि यार मैं इसका रिप्लाई करूं कि ना करूं, पर प्लीज ऐसा ट्राई करना कि हम हर क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाए, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ। चलिए, कोई एक ऐसी चीज जो पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से फरीदोन ने नहीं सीखी और वो कंटिन्यू करना चाहते हो, जस्ट वन थिंग जो पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से नहीं सीखी हो। यस, नहीं मतलब न्यू सीखना स्टार्ट किया हो, करना स्टार्ट किया हो, राइट, और मैं उसको कंटिन्यू करूं। काफी सारी चीजें हैं जैसे कि बर्तन धोना, पोछा लगाना और अच्छा। टेरेसेस को कितने अच्छे तरीके से धो सकते हैं ताकि गमलों के पीछे जो है अगर मिट्टी है तो वो भी साफ हो जाए, तो उसको किस तरीके से उसमें किस तरीके से ईमानदारी बरतना। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, इस पर मेरा काउंटर क्वेश्चन ये सिर्फ विश है कि ये जनता की मांग है घर में? ये घर में जनता की मांग है। कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन। ओके। और स्पेशली फरीदोन को कौन सी डिश पसंद है खाने में? I love food actually. I love it absolutely. So I love all sorts of things. I like all sorts of things, and I like mutton korma and chicken korma and stew, and I love dal, all sorts of dal and chawal, and I like different sort of roti like bajre ki roti and jowar ki roti and besan ki roti, and so I like different sort of rotis quite a lot. I like I'm not like heavily into sweet.
Okay. I don't, even though I love it, like in terms of sway and all that, but because of my profession, I have to sacrifice on sugar as much as possible. So that thing is, I like fruits a lot. I make sure that I have fruits on a daily basis, and I enjoy it as well. I love my black coffee. That's something that Okay. I can't live without it. So Okay. black coffee and green tea is something that I really like, and yeah. So I food I like a lot of things, a lot of things. That's good. We'll try to keep it very rapid and crisp for this kind of questions. Which is your so far favorite interview जो आपको ज्यादा पसंद आया? नंबर्स साइड में रखते हैं, उनकी सेलिब्रिटी फैन फॉलोइंग साइड में रखते हैं, पर आपको खुद को मजा आया वैसा इंटरव्यू कौन सा? बहुत है यार, प्रॉब्लम इसके साथ एक इंटरव्यू का नाम लेना बहुत मुश्किल है. But there are many of them. But I can take one name. Say if you since you're asking for it. So I did this interview with Rakhi Sawant Okay. last year, I think, or before that, 2018, mein. And that interview it not only got us more than 50 million views, but people still send me short videos from that interview on WhatsApp. Still, मुझे मिला है. In fact, a very famous singer he sent me like a clip from that, and he wrote a message कि आपको क्या क्या झेलना पड़ता है, because Rakhi being Rakhi what she is, but that interview is so entertaining, and it's amazing, and what people like about me in that interview is that I did not laugh, Okay. even though she has said hilarious stuff, but I did not laugh. So, but I was very conscious about the fact that I should not laugh. So that is, I think, one interview that is very entertaining. But one should not judge it. Yeah. People should not judge that interview. Yeah. और मैंने उसका एक छोटा सा क्लिप देखा, वो जो घास और ग्रास के बारे में जो बात कर रहे थे कि वो बीच अच्छा, में आपने देखा है? आपने देखा है? अच्छा. तो उस तरीके के बहुत से क्लिप्स हैं. उस तरीके के बहुत से क्लिप्स they keep on circulating on TikTok and WhatsApp all the time. Even now. चलिए अच्छा है, तो फिर ये इधर तक भी बात पहुंचती रहती है, पर ये हमारा रैपिड फायर मैं स्टॉप नहीं करना चाहूंगा. मैं मूव ऑन करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप नेटफ्लिक्स पर्सन है या फिर अमेजोन प्राइम? It's genuinely it's not possible to pick one, because I follow both of them, and both of them they have some amazing content and very different sort of content. So it's very difficult to pick, honestly. One It's word very for difficult to pick. movie platforms. What do you want to say? One word about the movie platform जो ऑनलाइन अभी चलता है. Like in terms of OTT platforms, Yes, yes. one word: future. Okay. Yeah. And who is your favorite Bollywood star? Obviously, as I told you, I cannot take one name. But since you're asking me, I'll tell you Dilip Kumar sir. Okay. Faridoon without cap, is it possible? Faridoon without cap, why not? It is definitely possible. Okay. And फ्री टाइम में फरीदून हमेशा क्या करता है? क्योंकि पोएट्री हमने देख लिया, आपका इंटरव्यू स्किल देख लिया. So I love music as well. Music is a passion for me as well. I love singing. So music, poetry. I like to cook at times. Yeah, so quite a few things. I like to read. Several things. I like to spend time with my family and talk to my friends or my family, and my family in Dubai, my mother and sister and brother there in Dubai. So I think quite a few things are there. जी आपको पसंद है. मैं ये रिक्वेस्ट गुस्ताखी करना चाहूंगा कि आप गाना गा लेते हैं क्या? कोई आपका फेवरेट गाना हो ऐसा? अच्छा, मैं आपको गाना सिंस आपने कहा है, तो मैं आपको मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ. प्लीज प्लीज. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा.
न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वेल हम भी आपके साथ है, स्टूडियो चार भी आपके साथ है और दुनिया पूरी आपके साथ है, क्योंकि जिस हिसाब से आप काफी एंटरटेनिंग, काफी सादगी के साथ जो इंटरव्यू करते हैं ना, वो स्किल बहुत ही रेयर है जो आपके अंदर है। और हम, स्पेशली मैं, उस बात को लकी समझता हूँ कि मुझे आज आपको इंटरव्यू करने का मौका मिला। बहुत बहुत थैंक यू बहुत। वेरी मच, वंडरफुल टॉकिंग टू यू, और लास्ट में वंडरफुल टॉकिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच। उनके टीम के लिए और कैनेडियन देसी स्टार्स के कंटेस्टेंट के लिए आपका एक छोटा सा मैसेज। Yeah, so Studio Chaar Productions and Canadian Desi Stars, I just wish them all the best. I'm sure that they're going to be rocking. They're having a great team. They're having great leaders in Heima and Arshad and a wonderful team, the likes of you and Sakshi and everyone else. So all the best wishes and keep rocking. Thank you so much, Faridoon. It was wonderful talking to you. And it's again one more time my pleasure talking to you like this on screen. क्योंकि Thank you. Thank you. लेकर आया तो स्टूडियो चार भी आपको हमारे सामने लेकर आया, इसलिए स्टूडियो चार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे। Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now.
Immigration Services. We have the expertise of former immigration officers who worked with the federal government of Canada for over 25 years. Our commitment to professionalism is our promise. For all your immigration needs, contact us at 416-831-7262. That's 416-831-7262. www.sharmasinghimmigration.com. Sharma Singh Immigration Services. We specialize in all complicated immigration matters. Ashoka Tandoori Range. Enjoy the Indian taste. Sharma Singh Immigration Services. We have the expertise of former immigration officers who worked with the federal government of Canada for over 25 years. Our commitment to professionalism is our promise. For all your immigration needs, contact us at 416-831-7262. That's 416-831-7262. www.sharmasinghimmigration.com. Sharma Singh Immigration Services. We specialize in all complicated immigration matters. Ashoka pickles, made with the goodness of olive oil. Enjoy the Indian taste. We all want to see our kids grow up strong and active. We all want to do the best to have a balanced diet. We all run towards becoming better and better every day. We all wish to celebrate elderliness by being healthy and cheerful. Health and wellness is our passion. We, Eye Care Naturals, follow our passion and deliver quality healthcare products to our clients' doorsteps, and that too with free shipping. Eye Care Naturals is one of the best-selling vegetarian and gluten-free multivitamins in North America for women, men, kids, and the elderly people, with all essential vitamins and minerals for less than $1.20. So come, make the switch and enjoy the change, because Eye Care Naturals is pure for sure. खाने के बाद एसिडिटी की बड़ी वजह डब्बों के मसालों में शामिल MSG, हाइड्रोलाइज्ड सोया प्रोटीन और केमिकल्स हैं। तो अब इस्तेमाल करें हबीब रेसिपी मसाला मिक्सेस, हर खाने की उसी लज्जत के साथ। नो MSG एडेड, हाइड्रोलाइज्ड सोया प्रोटीन और हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स के बगैर, शुगर फ्री, ग्लूटेन फ्री, सिर्फ और सिर्फ खालिस मसाला जात। हबीब रेसिपी मसाला मिक्सेस, अवेलेबल एट ऑल फ्रेश आउटलेट्स एंड ऑल देसी ग्रोसरी स्टोर्स अक्रॉस GTA. Ashoka Parathas. Enjoy the Indian taste. Hi guys, my name is Ali Yunus from Century 21 Rico. I'm a real estate agent in Durham area. I'm working as a real estate agent for past 5 to 6 years. A lot of information about real estate, buying, selling, commercial.
Etobicoke Motors Incorporation, serving the Greater Toronto Area since 1991. Car Guru's top-rated dealer of 2019. Ashoka mini samosas with chutney. Enjoy the Indian taste.